Hello, Ratsa. Can you hear me? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, thank you. So I make you ask, ma'am. Okay, so if suppose the other person has to share something, how will she share? Panelist can share, ma'am. Acha, panelists Both can share panelists. now. You both are share. Okay, okay, great. Thank you, sir. Hi, Ria. How are you? Mansi, I'm doing good. What about you? Yeah, I'm doing good, Ria. So we'll start in a bit. We have students joining us. So we have classes Yeah, till 5:30. So there might be 5 to 10 minutes here and there to join. But I guess okay. now we have No, like 20 participants. As Yeah. soon as some of them join, we'll start it. Okay. wait. Tia, have you come to Jaipur before this? Have you been to Jaipur? Yeah, I've been there twice. It's a nice city. Yeah, it's a nice place. It's a little colder though here. Oh, yeah, I can see. Yeah. Just give us around 5 minutes. We'll begin after 5 minutes. Okay, okay. No worries. Okay. They're all here. You can unmute yourself, Dr. Mansi. I'm sorry, I was in mute. So we have 40 students as of now. We'll Okay. just wait for another minute, and I think they'll all join. So the thing is, we have classes till 5:30, and this Okay. session is from 5:40. So they need a little buffer time to just freshen up and join again, and that's why a little of them, some of them are a little late, but yeah.
I think it's all right. I think students have joined us. So Ria, are you audible? Can you hear me? Yeah. You're audible. All right. So we'll start the session. Hello, Ria. We welcome you to Jaipuria Institute of Management, Jaipur. It's such a privilege to have you here in the session, telling stories that the world listens to. We at Jaipuria runs a course which is called Public Speaking and Persuasion, and part of that course is, to teach our students how to generate content, how to publish it, how to create audience engagement. And we have been following your reels and video at the Logical Indian. So we thought, who better than you to come here and sort of, tell us about your experience and all. So Ria, I welcome you once again. Mm, So much. Thank you, Dr. Himanshi, and hello everyone. So thank you, Dr. Himanshi. Thank you for inviting me here. It's a pleasure to be here, and thank you for that overwhelming introduction. Also, before we start, let me, give a slightly longer introduction of Ms. Ria Pandey to everyone. So, Ria Pandey is a multimedia journalist and a graduate from Kamala Nehru College, Delhi University. She's working as a video producer at the Logical Indian. She has experience of working both in print and digital media. Prior to joining the Logical Indian, she has worked in Hindustan Times, Democracy Live, India Ahead. She has also produced a radio docudrama, Water Crisis. She also runs a non-profit called Dal Chawal, which is recognized by Dettol, and she is proficient in um, all the different facets of video producing, script writing, news editing. So, having said all of these, we welcome you, Ria. We welcome you to Jaipur Institute of Management, Jaipur. Thank you, Dr. Himanshi. Thank you again. Okay, so before we begin, asking direct questions about content creation, I would really like to know, Ria, how did you ended up at, the Logical Indian? What was the journey like from being a journalist to a video producer? So it's like a good thing. I think, I ended up here very randomly. So I saw the job post on LinkedIn. And there, since like bachpan se I had a hobby of editing videos, editing images, just like something quirky, making some quirky things and all. So I had a talk with the HR person from the Logical Indian, and I told them that give me some task and I will show you because I did have very, professional degree as per se for video production or video editing. So yeah, but they gave me an assignment and to produce a video, and I did that, and they actually quite liked it. So yeah, that's how I landed at CLI, and I think it's been quite a fun because here you can enjoy your creativity. Okay, you can take that creativity call. Other than in journalism, in the mainstream journalism, we don't have. So that's the most important thing I like being on CLI. That's great, Ria. So yeah, I was always curious about how people at Logical Indian find or research stories. Like, how do you select a particular story, or how do you decide, okay, that this story is going to be live? And more than that, when you decide a story, how do you think of a topic that is catchy and all of those things? I really want to know about this process. So, can you elaborate a bit? Yeah. Uh, Paul, each company has its own visions or genre in which they produce their work, right? And if you want to be a content creator later, you will create a niche in which you will make your videos. So it could be gaming videos, it could be lifestyle, beauty, it could be anything. CLI Logically has many departments. Okay, one of them is fact checking department. And I make videos on good technology and climate action news, livelihood, inclusive society. So now that I know that in these, in these sections I have to make my videos, do and you follow specific social media accounts or YouTube channels which showcase those types of videos. Okay, so just an example, like to get any human centric or human interest stories, I would call accounts like Better India or Humans of Bombay. So from there, I select my story. So definitely depends. It depends on what kind of content you want to make today. Because each day we are producing almost like I am producing each day a two video. So yeah, that depends. And the very next step after selection of the topic, you have to collect all the information about the same topic. Okay, so by searching different articles, data,
I jot down all the points, information, data, and in one document before writing my script. And how do you reach a title for that particular video? What's the whole process like? So selecting a title. So that's like at the end part. I think that's totally a creative call, Imanshi, because we know somewhere that this thing must hit the audience mind, right? So making it more quirky, not generic, like like it's not plain statement. You have to make it more creative or quirky. तो वो एक बात नहीं होती है कि सीधे तरीके से नहीं बोलना, टेढ़ा तरीके से उसको बोला तो शायद वो अट्रैक्टिव लगेगा ऑडियंस को. Oh, that's interesting. So can you delve a little bit more about how you write a script, or what's your process of writing a script? Um, and what thoughts go into, let's say, um, because since you prepare scripts for different platforms, so what thoughts go into writing a script for different platforms? So अगर scripting का देखा जाए, so this whole session we can talk about scripting because each type of story has its own requirements. Okay, but before that, let me show you all a video. Let me share my screen. Can you share your screen? Or just let me know if you can't. Yeah, I think you can. Yeah. Can you all see the screen? Mansi? Yes, yeah, I can see. Watch this video, okay? Right. Can you hear the audio? No, I cannot hear the audio. So I think if you go to the advanced settings part, you can probably. Is there an option? Wait. No, you can't hear it. Okay, it's fine. I think we can listen to the. You can tell us about the sound factor. I think there are little subtitles, so we can just have a Yeah. look on how this video is framed. Yeah. ठीक है, okay. Let me play the video. Oh, that's nice. So I have few questions, but I guess we'll take the questions after we finish our discussion with Ria. Yes, so Ria, I saw it's a very interesting video and also an interesting concept. So yeah, tell me, how did you finalize the script? And yeah, because we couldn't listen to it, can you please tell us all those things too? So this video is about Easy Spit. It is a product which is a biodegradable solution for spitting. So I got information from one of the articles of Better India. Okay, and I got the now that in that article you get all the information, right? So now the key is here. You got the story, you got the information. Now how will you deliver the story in your video? So भाई अगर scripting का देखा जाए तो each story will demand have its own requirements, ठीक है, but add some key things, ठीक है मानसी, and कभी भी कोई आपको रील देखने के लिए स्पेसिफिकली आपके रील सेक्शन में नहीं जाता है, ठीक है, दे जस्ट प्रेस दी रील आइकन एंड उनको हजारों अलग अलग टाइप्स के रील शो होते हैं, ठीक है, इंटरटेनमेंट हो गया, म्यूजिक हो गया, एंड देयर आर सो मेनी. So for your first 3 seconds of the reel, the first 3 seconds of the script, in fact, should be very captivating. That means कि स्क्रिप्ट की शुरुआत हमेशा हम लोग एक हुक से करेंगे, okay?
लाइक समथिंग इंटरेस्टिंग, जैसे आपकी व्यूअर्स को अटेंशन मिले। जैसे मैंने आपको अभी जो वीडियो दिखाया, इट स्टार्टेड विद नॉक नॉक, डू यू नो व्हाई दिस? ठीक है, कैचिंग स्टेटमेंट। ठीक है, तो जो भी लोग, जो ऑडियंस अगर ये विजुअल देखेंगे तो दे विल डेफिनेटली स्टिक टू द वीडियो। ठीक है, सो डू यू नो इज द मोस्ट कॉमन एंड पॉपुलर वन टू स्टार्ट द वीडियो, एंड दिस इज नोन एज द हुक व्हिच आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमारा जो भी स्टोरी होगा, बिकॉज 3 सेकंड्स में वो ना ऑडियंस अगर चाहे तो वो आपका वीडियो स्क्रॉल कर देंगे ऊपर, तो वो 3 सेकंड बहुत मैटर करता है स्टार्टिंग के वीडियो में। ठीक है, तो डेफिनेटली अपना वीडियो हमेशा हम लोग एक हुक से ही शुरू करते हैं। ठीक है, एंड जब हुक डिसाइड हो जाता है, व्हेन हुक इज डिसाइडेड, हम लोग उस फिर वैसे ही ट्रेंड से फॉलो करेंगे। वन थिंग वी हैव टू कीप इन माइंड दैट ऑडियंस शुड रिलेट टू व्हाट यू आर टेलिंग देम। ठीक है, स्टोरी ऑल अबाउट दिस, यू हैव टू मेक द कंटेंट रिलेटेबल फॉर योर ऑडियंस। ठीक है, तो हमेशा एक कैजुअल एंड कॉन्वर्सेशनल स्टाइल में तो शुरू होगा, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे टू मेक योर वीडियोज एंगेजिंग। ऐसा एक्सपीरियंस हो जिससे लोग भी रिलेट कर पाए, उन्होंने भी सेम चीज एक्सपीरियंस किया हो, तो बैकग्राउंड के साथ हम अगर हमारा कॉन्टेक्स्ट दे, दैट्स ग्रेट। तो इसके रेफरेंस में आई वांट यू, ओके लेट मी प्ले वन डिफरेंट वीडियो कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ आपको समझ में आए। So, is there a sound problem, Ria? हेलो हिमांशी, कैन यू हियर मी? Yeah, I can hear you, but the thing is, the video that you're playing, we cannot listen to it. No, I'm about to play. Okay. Wait, give me 2 minutes. Can you see my screen, Himanshi? Yes, I can see your screen, but can you just play it so that we can confirm if we can hear it also? No, we cannot. We cannot. So, can you just send me this video so that I can play it for my students here? Yeah, okay. Can you just, give me the link of this particular video? Give me 2 minutes, Himanshi. Yeah. Raj sir, can you hear me? Just searching for the link. Hello? Yes, Priya, I've received it. Let me see if I can play it. Yeah. So, Ria, the moment you share the video, an option will crop up which says allow sounds in that video. So try doing that. So, a pop-up will come that allows sounds. While you share the video, a small tick box will come. Is a tick box coming? Before sharing the video, when you share the video, a tick box will come that allows sounds. Share sound. Now I think you can listen. Check. यार यहाँ पे तो मौसम इतना हाँ, right. We can listen to the video. Yeah, correct. So can you just play it once again? Yeah. यार यहाँ पे तो मौसम इतना अच्छा है ना। Wait. यार यहाँ पे तो मौसम इतना अच्छा है ना, एकदम फ्रेश हवा चल रहा है, तुमको पता है? यार यहाँ पे तुमको पता है कितनी गर्मी रहती है, इतना ज़्यादा पॉल्यूशन है, अभी तो हमें नहीं मिल रहा है भाई फ्रेश हवा, भी तुम ही एंजॉय करो। क्या बात कर रहे हो? फ्रेश हवा चाहिए तो मुझे बोलो ना, मैं दिलाती हूँ।
ओह अच्छा, अब तो मुझे ये बोलेगी कि मैं शिमला या मनाली चले जाऊं। नहीं भाई, तुम भी स्मार्ट प्लांट ले आओ ना, फिर तुम्हारे भी रूम की हवा एकदम मस्त क्वालिटी की मिलेगी। ये कैसे पॉसिबल है? पॉसिबल है। दिस स्मार्ट फ्लावर प्लांट कैन प्यूरिफाई योर रूम इन जस्ट 20 मिनट, जो मिनटों में एयर क्वालिटी इंडेक्स पे 285 लेवल से सेफ लेवल 30 तक इम्प्रूव कर सकता है। देयर आर सर्टेन प्लांट्स जो एयर के टॉक्सिक एलिमेंट्स को लीव से नहीं बल्कि रूट से प्यूरिफाई करते हैं। यू ब्रीथ फ्लावर पॉट्स यूजेस द फिनोमिनन ऑफ बायोफिल्टरेशन। ये प्लांट्स पॉल्यूटेड एयर को अब्सॉर्ब करके सॉइल में पुश करती है एंड रूट्स उस पॉल्यूटेंट्स को सप्रेस करके प्यूरिफाइड एयर बाहर रिलीज करती है। इट यूजेस 3 components: a plant, a smart flower pot and microbe enriched soil. मार्केट्स में there are very expensive artificial purifiers, but IIT कानपुर के alumnus संजय मौर्य ने इसे naturally and affordable बनाना चाहा। इन्होंने अभी तक 5 डिफरेंट एयर प्यूरिफायर प्लांट्स को टेस्ट किया है, जिसमें से फ्लावर पॉट विद स्नेक प्लांट इज वेरी इजी टू मेंटेन। ये हॉस्पिटल्स, ऑफिसेस, स्कूल्स या घर में भी लगाए जा सकते हैं। सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस कूल आइडिया? अब तुमको फ्रेश एयर के लिए शिमला, कुल्लू, मनाली जाने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। And you wanted to be a part of like-minded change makers? Join our Telegram community now. Link is in the bio. Let's catch up soon. All right. This was a wonderful video, Ria. Thank you, Mansi. So yeah, we was talking about like the presentation of this video. तो ये You Breathe Air Purifier का video है, and इसमें मैंने video के starting को किस तरीके से किया, I use this context कि how people living in metro cities like Delhi फ्रेश हवा एंजॉय करने के लिए वीकेंड्स में मनाली या शिमला चले जाते हैं। ओके, सो दिस इज वेरी रिलेटेबल, ये हम सब ने एक्सपीरियंस किया होगा, सुना होगा, देखा होगा। तो डायरेक्टली शुरू करने के बजाय आई हैव यूज्ड अ कॉन्टेक्स्ट हियर, ठीक है, इन अ वेरी स्टोरी टेलिंग फॉर्मेट, and I've basically used different kind of narration, which is like I have been like in 2 characters, right? They both are friends. So exactly like in conversational style में हमें 5W and 1H भी deliver करना होता है, ठीक है। So okay, what is 5W and 1H? 5W means when, what, where, why and who, and 1H means how. So ये जो 6 चीज है ना, 5W and 1H, ये किसी भी इंफॉर्मेशन का पिलर होता है। Any video, so okay, what make sure कि किसी भी वीडियो में हम ये 6 चीज तो जरूर ही इंफॉर्मेशन, इस 6 चीज का इंफॉर्मेशन तो ऑडियंस को दे ही, तभी आई थिंक वो वीडियो कंप्लीट है। And being like in from a journalist background, definitely we make sure कि ये 5W and 1H का फंडा हर एक स्टोरी पे हो, so ये इंफॉर्मेशन हर लोगों को जाए। Oh, that's interesting. So either you start a story by a hook, जैसे do you know, अगर do you नहीं है तो you also play characters and make it a conversation so that the audience gets hooked on it. And you've told us a very nice thing that you need to give us 5 W's and 1H in all these stories, because which is really basic and it sort of covers all the information that you want to share. Oh, that's wonderful. But Riya, you also mentioned this important thing कि आपको अपना content relatable बनाना है. Okay, so I wanted to ask कि when your demography is really wide, ठीक है, आपका like probably a child of 10 is seeing your reel, an adult of 70 is seeing your reel. So knowing this wider demography, does it affect your way of telling stories? Okay, so yeah, it's a digital era, and now your content can be seen by anyone around the world at any point of time, ठीक है। So target audience definitely differ, but still आप किस स्टोरी पे काम करते हो तो आप एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये स्टोरीज शायद इस सेक्शन के लोगों को ज्यादा पसंद आएगी, ठीक है। जैसे मैंने वो सबसे पहला वीडियो जो दिखाया था इजी स्पिट वाला, डू यू नो व्हाई वी स्पिट, तो कहीं न्यू प्ले वीडियो शायद टीनेजर्स एंड यूथ को ज्यादा पसंद आएगा, एंड दे विल डेफिनेटली शेयर दिस वीडियो टू देयर पेरेंट्स और रिलेटिव्स। बेसिक अंडरस्टैंडिंग आपकी स्टोरी से मिली है, तो स्टोरी भी वैसे ही शेप होगा। जैसे अगर पता है कि यूथ है, एंड अगर ये यूथ टारगेट ऑडियंस आपका यूथ है या फिर पॉपुलेशन है जो बहुत कूल है, क्वर्की है एंड ऑल, आपका जो स्क्रिप्ट का प्रेजेंटेशन भी वो भी वैसे ही होगा। बट डेफिनेटली अगर आप किसी सीनियर सिटीजन को टारगेट कर रहे हो अपने स्टोरी के थ्रू, तो उसका कॉन्वर्सेशनल शायद बहुत सीरियस होगा। Okay, okay. Yeah. Okay. So what you're trying to say कि rather than this, I mean, despite that this wider audience, कहीं ना कहीं you have this knowledge of a target audience. Okay, Yeah. okay, हाँ, that's I guess makes complete sense to me.
Okay, so now see, now you create a script, and then this other part of shooting that script, right? So can you elaborate on the process of shooting what you've written? Okay. So फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस कि शूटिंग के लिए ऐसे कोई बहुत लार्ज इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है, ठीक है, कि हमें Yeah, एकदम that's स्टूडियो thank you चाहिए. for clearing that. Also, we have in our students who have their own YouTube channels and they shoot and all of that. So yeah, they might be benefited from this. Yeah, you were saying. तो लाइक हाँ, फर्स्ट क्लैरिफिकेशन वांट टू क्लियर हियर कि कोई भी बहुत ज्यादा आपको हेवी इन्वेस्टमेंट नहीं करना पड़ता है तो बिगिन. अगर आपके पास स्टूडियो है वो सब है देन इट्स ग्रेट, ठीक है. नहीं है तो इट्स फाइन. सी लाइक राइट नाउ आई एम शूटिंग विद जस्ट 3 रिसोर्सेज. वन इज माय मोबाइल कैमरा, सेकंड इज अ माइक, एंड थर्ड इज अ रिंग लाइट. दैट्स इट. दैट्स इट नीडेड फॉर प्रोड्यूसिंग अ वीडियो. सो रिसोर्सेज की बात अगर वहाँ पे है तो शूटिंग के लिए ऐसे कुछ जरूरी नहीं है कि एक स्टूडियो होना चाहिए, बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा तभी हम वीडियो प्रोडक्शन शुरू करेंगे, ठीक है. यू कैन स्टार्ट विद द बेसिक्स एज वेल. एंड सेकंड इम्पोर्टेंट थिंग, हम जब स्क्रिप्ट लिखते हैं तभी वी गेट टू नो द टोन ऑफ द स्टोरी, ठीक है. So I would like to stop you here because there's a question a student has asked that the question क्योंकि ये question tone से है तो मैं पूछना चाहती हूँ. The question is, can you share what are the ways to decide the tone of a particular content? So yeah, can you just answer this question in your answer? हाँ, ओके. तो वही मैं बता रही, कोई भी स्क्रिप्ट अगर लिखते हैं तो टोन पता हो जाता है. अब हम बता रहे कैसे इसका पता होता है कि फॉर एग्जाम्पल जब मैंने इजी स्पेड का वीडियो बनाया ना, निकल लगा उसके इन्फॉर्मेशन से कि यार ये थूकने का बीमारी इंडिया में बहुत, ठीक है, बट वी कांट टेल एनीबॉडी कि यहाँ पे मत थूको, वहाँ पे मत स्पिट करो, ठीक है. तो इसका ये बड़ा कूल फंडा है यार, अगर हम ये बायोडिग्रेडेबल स्पून सबको दे दें तो काम हो जाएगा, ठीक है. डायरेक्टली आप स्टोरी देख कर ही लगेगा हिमांशु कि अरे हाँ इस चीज को हम ऐसे शेप कर सकते हैं, ठीक है, बिकॉज आप कहीं ना बेसिक स्टैंडिंग पे है कि अच्छा ये पापा मम्मी को बहुत पसंद आएगा, ये हमारे यंगस्टर्स को बहुत पसंद आएगा, ठीक है. टोन शायद अगर डेफिनेट क्रिएटिव कॉल है, ठीक है. अगर हम चाहे तो हम उसको बहुत सीरियसली भी दिखा सकते हैं, डू यू नो व्हाई वी स्पिट, ठीक है. बट एग्जैक्टली इंगेजमेंट मैटर्स ना, कि आपको लगता है कि नहीं सीरियस टोन पे उतना एंगेजमेंट हमें नहीं मिलेगा जितना हमें कॉमिकल एंड फन तरीके से मिलेगा, ठीक है. तो टोन हम वहीं पर डिसाइड करते हैं स्क्रिप्टिंग पे, ठीक है. एंड शूटिंग पे व्हाई इट मैटर्स बिकॉज जो टोन हम लोग स्क्रिप्टिंग पे डिसाइड करते हैं, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो शूट करने वक्त भी वो टोन हम लोग रिफ्लेक्ट करें, ठीक है. सो लाइक फॉर एग्जाम्पल अगर कोई सीरियस टोन का वीडियो है, ठीक है, बहुत सीरियसली हम किसी टॉपिक पे बात कर रहे हैं विच इज कंसर्निंग एंड ऑल, most probably I will be dressing in office wear clothes and talking very professionally in front of the camera, ठीक है. बट अगर वहीं पे चिल बहुत कैजुअल टोन का कोई मेरे को इन्फॉर्मेशन डिलीवर करना हो, कोई स्टोरी बनानी, तो देखो बाहर चिल करके कहीं आराम से बैठे नॉर्मल कैमरा से, कोई सेटअप ना हो, कोई फेक स्टूडियो का सेटअप ना हो, नॉर्मल कैमरा अपना फुल और एकदम काम एंड कैजुअल टोन से वो इन्फॉर्मेशन डिलीवर करे. तो स्क्रिप्टिंग जो सोच जब हम शूट करते हैं तो हम इस चीज का बहुत ज्यादा ध्यान रखना पड़ता है, बिकॉज अपने शूटिंग पे टोन का ध्यान नहीं रहे एडिटिंग पार्ट पे सुधर नहीं सकता है, ठीक है. तो वो ये शूटिंग पार्ट पे जो हमारा ये प्रोडक्शन का पार्ट होता है उस पे ही बहुत ज्यादा मैटर करता है. तो आंसर क्लियर हुआ क्या टोन का? I think so. So if you have more questions, please put in through so that we can answer. We can ask Ria in between. So you've also mentioned editing. नहीं, ओके, बिफोर दैट आल्सो मानसी, शूटिंग की लाइटिंग बहुत मैटर करता है. क्लियर लाइटिंग बहुत शार्प होना चाहिए, ठीक है. हमें कभी कभी लगता है कि नहीं अगर हम डे लाइट सही, अगर आप ऑन साइड शूट करने जा रहे हो तो डे लाइट से लाइटिंग सही है, बट आप स्टूडियो में है तो आई थिंक आपको हाई डेफिनेशन की लाइट चाहिए होंगी. और आई थिंक वीडियो से ज्यादा कभी कभी मैटर करता है ना, एस्थेटिक वीडियो से ज्यादा मैटर करता है कभी कभी क्लियर ऑडियो होना. ऑडियो क्रिस्प एंड क्लियर होना चाहिए, ठीक है. तो उसके लिए माइक बहुत इंपॉर्टेंट है. बैकग्राउंड नॉइज नहीं होना चाहिए, ठीक है. बट आई थिंक बैकग्राउंड नॉइज अगर थोड़ा बहुत हो भी तो वो हम लोग एडिटिंग से कट ऑफ कर सकते हैं, ठीक है. एंड हाँ, वन पर्टिकुलर थिंग जिसके लिए बहुत ज्यादा वी हैव टू मेक श्योर, बिकॉज सी कोई एक टेक नहीं होता ना शूटिंग में कि हम एक टेक में पूरा 90 सेकंड का वीडियो एक ही बार में बोल रहे, तो हमें काफी रीटेक लेना पड़ता है. तो उस रीटेक में हमारा पोजीशन भी चेंज होता है, ठीक है.
तो उसपे वी हैव टू कीप वन थिंग वेरी श्योर कि हमारा फ्रेम जो है ना वो प्रॉपर्ली सेट होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आई एम स्टैंडिंग हियर, आई एम सिटिंग हियर, तो मेरे हेड स्पेस ज्यादा नहीं होना चाहिए कि बहुत ज्यादा गैप है, ठीक है। कहीं अगर हम ऐसे बैठे हैं तो मेरा कहीं हाथ कट नहीं होना चाहिए, ठीक है, कोई स्पेस वेकेंट नहीं होना चाहिए। So the present should be, perfectly fitting into the frame. So that matters a lot while shooting. Sorry. Oops. Sorry, Nancy, for the slight disturbance. It's fine, it's fine. So you mentioned about editing process, right? Because okay, you've created a script, you've shooted a video, now comes the editing process. So what goes behind, this process? And then, like, how do you decide, okay, this video is final now this is going to be out there? And also, when you shoot, is there a, like, how to start and end the video? Like, what are the thoughts that goes into this entire editing thing? Okay. Editing, I think, is the stage where we, polish our video and make it look, make it ready for the audience. So अगर basic elements देखे editing का, तो trim हो गया, cut, copy, animation, उसमें कुछ background music add करना, text add करना, color grading. So like any element that will make your video look eye-catching. Okay. So, right, I've been using Premiere Pro software, Adobe Premiere Pro, for editing all my videos. But uh, there is some free apps available, free mobile apps available. Okay, I think you must have heard about InShots. Okay, it's a great app where you can, you can do some basic editing, and they have some amazing transitions as well. And other than InShots, I think there is VN Editor app, Canva. Okay, and the best using these mobile apps is that they are very user friendly. I mean, you can easily find tutorials on YouTube as well. So editing again, works like these, I think Himanshi, it's a very creative work, right? अगर कोई सेम स्क्रिप्ट मुझे पकड़ा दिया जाए और फिर किसी दूसरे वीडियो एडिटर को ही पकड़ा दिया जाए, नो मैटर स्क्रिप्ट सेम, पर जो प्रोडक्शन होगा ना वो डेफिनेटली डिफर करेगा। इट इज क्रिएटिव कॉल फॉर द वीडियो एडिटर कि वो कहाँ पे साउंड इफेक्ट्स यूज करना चाहता है, पे ग्राफिक्स यूज करना चाहता है, कहाँ पे कोई क्वर्की एलिमेंट्स यूज करना चाहता है, ट्रांजिशन यूज करना चाहता है। तो अब स्क्रिप्ट देखकर टोन तो पता चल जाता है, राइट, कि ये बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बनाना है वीडियो को, तो उस अकॉर्डिंग, ठीक है, अब आपके ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग आप उसको एडिट करते हो, ठीक है। और जहां तक स्टोरी का स्टार्टिंग का बात आया, ओपनिंग जैसे मैंने बताया कि हुक से ही होगा, ठीक है। तो हुक में जब भी हम लोग बोलते हैं ना, तो आप देखोगे, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगेन आई एम गिविंग वन एग्जाम्पल कि जो मैंने वीडियो डाला ना, नॉक नॉक, डू यू नो व्हाई दिस फिट, तो नॉक नॉक में आप देखोगे एसएफएक्स होगा नॉक नॉक का, ठीक है। दीज आर वेरी स्मॉल थिंग बट डेफिनेटली डिसाइड्स द टोन ऑफ द वीडियो, ठीक है। अट्रैक्शन या अट्रैक्ट करता है ऑडियंस को, ठीक है। क्लोज वीडियो इज लाइक, again, it depends. It is a creative call, Manju, how to close the video. Okay. So, Ria, you create content for different platforms. So, can you talk a little about different formats for different content creation? Okay. So Instagram, like my videos goes live on, I think, 5 platforms: Insta, LinkedIn, YouTube, Facebook, and what's more, Twitter. So I think YouTube, Instagram, and Twitter, I think in fact Facebook also, they have that one dimension, 1920 into 1080 into 19. But again, Himanshi, it honestly depends on the type of content you are creating. ठीक है, अगर डे टू डे जनरल स्टोरी होता है, देन तो वी कैन फॉलो द सेम वे ऑफ नरेशन, ठीक है। तो जस्ट फॉर एन एग्जांपल, अगर कोई, बट बट अगर कोई आउट ऑफ द बॉक्स स्टोरी है, कोई क्वर्की स्टोरी है, तो नॉर्मल नरेशन के बिना हम लोग अलग अलग कैरेक्टर्स के भी साथ प्रेजेंट कर सकते हैं, राइट, जो मैंने दूसरे स्टोरी पे दिखाया, जिसको सिंपली भी प्रेजेंट कर सकते थे हम लोग, बट आई चोज कि हम दो कैरेक्टर्स पेयर ऑफ फ्रेंड एंड देयर इज अ कन्वर्सेशन going on. So, okay, but so yeah, exactly. But it depends on the tone and the story.
सो और डेफिनेटली अगर कोई सीरियस नेचर का स्टोरी होगा देन डेफिनेटली हम ऐसे अलग अलग कैरेक्टर्स के साथ नरेट तो नहीं कर सकते. It's creative call which you as a creative person will take. So yeah, your reels have garnered more than 100K views and all. So what are some of the ways in which you know in which you know that this is going to generate maximum audience engagement? So वो कैसे generate होता है and how can you tell us a bit about all of that? Maximum engagement के लिए there are many factors that we consider. ठीक है, सबसे पहले तो the story we are picking. तो कहीं ना कहीं अब there are many plenty of stories available on internet, but कौन सा आपको interesting लग रहा है? अगर आपको भी interesting लग रहा है तो definitely आपके friends को भी interesting लगेगा, आपके वो age group के बच्चों को भी interesting लगेगा. So that's how we can decide कि अच्छा ये interesting है. So कोई भी human centric issue होना चाहिए जिससे automatically आपको लगेगा कि this will be interesting for your audience. ठीक है. Also selection of topics हम इस तरीके से भी कर सकते हैं कि there are few websites, ठीक है, जहाँ से आप चेक कर सकते हो कि अभी कौन-कौन सा टॉपिक ट्रेंडिंग है इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे. तो आप उस स्पेसिफिक टॉपिक पे भी अपना स्टोरी क्रिएट कर सकते हैं. तो डेफिनेटली वहाँ पे कि वो ऑडियंस एंगेजमेंट हुआ कि दिस स्टोरीज विल बी लाइक्ड बाय द ऑडियंस. एंड सेकंड अबाउट पोस्टिंग आवर वीडियोस. तो हम लोग जनरली अपना रील्स लंच के टाइम अराउंड 2 o'clock to 4 o'clock या रात में 8 to 9 to 10 PM में पोस्ट करते हैं. ठीक है. और इसके बीच छोटा सा लॉजिक है कि ज़्यादातर ऑडियंस अपने लंच ब्रेक में कैजुअली फ़ोन को निकाल के रील्स स्क्रॉल करते रहते हैं. जिनका स्टोरीज नहीं भी देखना होता है उनको भी वो बोर्डम की तरह देख लेते हैं. एंड या फिर ऑफिस से लौटते वक्त वी कैजुअली गो थ्रू द रील सेक्शन एंड वहाँ पे स्क्रॉल करते हैं. तो हमने देखा है कि इन दोनों टाइम पर काफ़ी इंटरनेट ट्रैफिक होता है, तो उससे भी आपका रील्स काफ़ी लोगों तक पहुँच सकता है. एंड अदर देन दैट हैशटैग्स. या सो हैशटैग में क्या है कि किसी भी जो भी आप स्टोरी क्रिएट करते हो उससे रिलेटेड जो भी कीवर्ड्स होते हैं जो पॉपुलर होते हैं, तो जब आप हैशटैग लगा के सर्च करोगे, फॉर एग्जांपल हैशटैग इंडिया और बेंगलुरु, तो उसपे आपको दिखेगा कि कितना मिलियन पोस्ट जा चुका है. तो अगर इट इज लाइक अबव 10 million और 8 million, so that hashtag is nice, it will work. Okay, so hashtag generally, but ऐसे देखा जाए तो प्रेफरेबल टू यूज मैक्सिमम 7 to 8 हैशटैग्स. हम बहुत सारे पोस्ट में ऐसा देखते हैं कि वायरल रील्स वायरल इंस्टाग्राम पोस्ट, तो इतने सारे हैशटैग्स होते हैं. बट नो, ये बिल्कुल भी इम्पोर्टेंट नहीं होता कि हम इतना सारे यूज करें. 7 to 8 हैशटैग्स विद मतलब विल वर्क. ठीक है, ज्यादा हैशटैग यूज करने से कुछ नहीं होता है. रेलेवेंट कीवर्ड्स जो पॉपुलर है उसको यूज करो आप. 7 to 8 मैक्स, वो वर्क करेगा. So I think these three, selection of topics, second ये रील्स को किस टाइम पे पोस्ट करना जब आपको लगता है कि हाँ ऑडियंस ज्यादा ऑनलाइन रहते हैं, एंड थर्ड दी हैशटैग. Okay, thank you, Riya. So Riya, this might be a very silly question, but ये कहाँ से पता चलता है कि ये सारे टॉपिक्स ट्रेंडिंग है? Like is this a particular website or from where do you get to know? There are particular websites. You can search randomly. I think Manshi, Google, you can do random search. ठीक है, popular topics on Instagram. That's it. You will get to know topics which are going viral these days. Okay, Indian topics which are going viral, like that too. So these are some of the keywords जो कि use करना है search हाँ, करने के Google लिए. search. Yes. Oh, that's nice. So Riya, it seems कि आप काफी टाइम से ये सब काम कर रहे हैं, and you have the idea of how to select these topics, how to find those topics which will be interesting to the audience, how to create a hook, then how to shoot, then how to post those videos at during particular intervals, because lunch time या फिर ऑफिस से जाते वक्त. So अभी तो आपको ये सारी चीजें पता है, okay? But I really want to know when you were beginning, like how long these process used to take and how much did you rehearse? पहले आप कितना रिहर्सल करते थे? Now that you've hang of it, आप कितना रिहर्सल करते हो before putting out a video? Okay. So at the beginning, I was
it was really slow. When I started producing videos, it took a lot of time for me to shoot. Like for a 90-second video, it took almost 2 hours, okay, to get ready, to set my camera, set my frame, and then shoot. But I think now it's been quite a lot of time, Himanshu, since I'm producing 2 videos daily. So now for a 90-second video, it takes around only 45 minutes or max 1 hour to shoot 90 seconds of video. And regarding those posting things and which hashtags are working or they're not working, it's tried and tested process. अगर आप इतने कंसिस्टेंट हो अपने कंटेंट को हर दिन पोस्ट करते हुए तो डेफिनेटली यू विल सी कि कहाँ से ऑडियंस का ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है, किस टाइम पे ज्यादा एंगेजमेंट आ रहा है। आप जो स्टोरीज डालते हो उसका एंगेजमेंट किस टाइम ज्यादा होता है, लोग रात में ज्यादा देखते होते हैं कि सुबह ज्यादा देखते होते हैं। तो इंस्टाग्राम में डेफिनेटली बहुत सारे ऐसे एनालिटिक्स हैं जहाँ से आप मेजर कर सकते हो कि आपका कौन सा कंटेंट कितना वायरल जा रहा है, कौन सा कंटेंट पसंद आ रहा है। इनफैक्ट इंस्टाग्राम पे ये भी फीचर अवेलेबल होता है जब आपका अकाउंट पब्लिक होता है कि किस एरिया के लोग, किस रीजन के लोग आपका ज्यादा व्यू करते हैं कंटेंट, लाइक बैंगलोर के या फिर दिल्ली के। एंड दे ऑल्सो टेल यू द एज के 18 टू 24 ऐसे वो शो भी करते हैं। तो इट्स या इट्स ट्राइड एंड टेस्टेड प्रोसेस। धीरे धीरे आप जब इतने कंसिस्टेंट हो, आप हर दिन 2 वीडियोस डाल रहे हो, तो बस वो फिर सेंस हो जाता है कि अच्छा नो, ये वीडियोस ये लोग पसंद नहीं कर रहे हैं, ठीक है, इस वीडियो में मुझे ज़्यादा वो आ रहा है। आई थिंक एडिटिंग भी वही होता है, ठीक है, हम लोग 2-3 बार ही बहुत सारा टेम्पलेट सेट करते हैं, 2-3 टेम्पलेट होता है और हम लोग कैट जो हर दिन वीडियोस निकालते हैं तो हम लोग देखते हैं कौन सा टेम्पलेट ज़्यादा पसंद आ रहा है लोगों को। ठीक है, टेम्पलेट मीन्स अब टेम्पलेट पूछोगे तो टेम्पलेट क्या होता है कि लोगो कहाँ पे है, कौन सा फ़ॉन्ट हम यूज़ कर रहे हैं, कितने एसएफएक्स यूज़ कर रहे हैं, किस टाइप का ग्राफिक्स यूज़ कर रहे हैं। वो 2-3 टेम्पलेट हमें सेट करना पड़ता है, अगेन ट्राइड एंड टेस्टेड। ठीक है, हम लोग पहले देखते हैं कौन सा ज़्यादा अच्छा हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। तो या So it seems a lot goes inside it, like, where to put the logos, which template to use, which graphics to use, and all of these things. So a 40-second reel requires all of these things. बहुत ज़्यादा, एंड हमें वो पता नहीं चलता है बिकॉज़ डेफिनेटली जो ऑडियंस देखती है वो एकदम फाइनल शॉट देखती है। एंड इसके पीछे आई थिंक लेट मी टेल यू, कितना भी छोटा वीडियो हो ना, मानसी, इट्स लाइक 60 सेकंड्स वीडियो टू, आपका स्क्रिप्टिंग पे, लाइक अब हम इतने टाइम से काम कर रहे हैं तो हमारा स्क्रिप्टिंग सब कुछ रिसर्च एंड सब कुछ मिला के 1 आवर में होता है, ठीक है। बट डेफिनेटली द पीपल हु विल स्टार्ट, आराम से 2 घंटे लगते हैं स्क्रिप्टिंग पे, बिकॉज़ स्क्रिप्टिंग क्रिएटिव चीज़ है, यू कांट डिफाइन कभी रिया के लिए ये वर्क कर रहा है 1 घंटा, तो फिर आपके लिए भी वही चीज़ वर्क करेगा, ठीक है, बिकॉज़ वो प्रोसेस अलग काम करता है। और सेकंड, एडिटिंग अगर फॉर 60 सेकंड्स एडिटिंग, ठीक है, इट टेक्स अराउंड 3 आवर्स मिनिमम फॉर एडिटिंग 60 सेकंड्स ऑफ वीडियो। तो आप सोच लो जो यूट्यूब वीडियोस 1 मिनट, 2 मिनट, 15-16 मिनट्स के लॉन्ग रहते हैं, उनको कितना टाइम लगता होगा एडिट करने में। Oh my God. No, I used to appreciate the videos. Like now I'm just full of, appreciation and gratitude and whatnot. Now, whenever I see a video, I'll, back of my mind, all these things that you've mentioned will go. कि हाँ कितनी मेहनत लगी है, we cannot easily dislike the video. I mean because of course a lot of effort and work has been put into it. So Ria, I saw your videos. I've been following the Logical Indian. I've been following your reels. I see that you put a lot of different facial expressions in your video. You use a lot of voice modulation. आप अलग तरीके से बात करती हैं, आप अलग टोन में बात करती हैं, वॉल्यूम ऊंचा नीचा होता है, and all of those things. So can you tell me the importance of those things in making a video, and how do you decide it? The entire process of uh, yeah, checking on voice modulation, facial expressions, and body language and gestures and all of that. वो मेरे ना एकदम like but I know the significance of these things because see exactly, आप जब अच्छे होते हैं कॉन्वर्सेशन पे तो आप कोई भी चीज़ अगर नॉर्मली स्टेट में से बैठ के माय नेम इज रिया पांडे, आई एम डूइंग दिस, उससे आप इंटरेस्ट, उससे आप ऑडियंस को अपने तरफ अट्रैक्ट नहीं कर पाओगे। तो देयर शुड बी सम मॉड्यूलेशन, वॉइस मॉड्यूलेशन एंड फेशियल एक्सप्रेशन, जिससे आपका वो कम्युनिकेशन अट्रैक्टिव लगे, ठीक है, वो अपीलिंग लगे इन दैट सेंस। तो these two things are very important, ठीक है, it conveys the speaker's emotions and make the communication more effective, ठीक है। Also these two things,
हमारा कंटेंट कंपेलिंग हो जाता है, ठीक है? जब हम ऐसे कन्वर्सेशन करते हैं, तो अगर होता है ना कि इस वीडियो से हम अपनी ऑडियंस में कोई इम्पैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं, तो अगर आप वो चीज़ यूज़ नहीं करोगे, तो योर होल कन्वर्सेशन विल बी वेरी डल एंड देयर आर अ होल लॉट ऑफ कंटेंट अवेलेबल इन इंटरनेट। तो फिर आपको कंटेंट को उतना सिग्निफिकेंस नहीं दिया जाएगा, बट व्हेन यू विल बी यूजिंग दीस टू थिंग्स, ठीक है, ऑटोमेटिकली कंटेंट बहुत ज़्यादा कंपेलिंग हो जाएगा, ठीक है? सो लाइक फॉर एग्जांपल in a video where I have to tell audience that this fact is concerning and it is important to take action, then I will speak much more convincing manner. A little bit of loud tone, not like and my facial expression should definitely reflect the same attention, like same emotion. So like okay, for example, these many people are losing their lives each day. So, you have to do this while putting you have to use that voice modulation while generating that kind of content, because तभी उसके बाद आपका वो मतलब वो compelling होगा, वो attractive होगा. Yeah. Can you tell us the name of few content creators, to whom you follow, and what do you like in them? For Naaz Daily, I think यहाँ पे बहुत सारे लोग Naaz Daily को follow करते होंगे, I hope so, because उनका content again they only use 60 seconds of the time, and it is so in rhythm. एक tone होता है throughout the video, and ऐसा कोई Himanshi they they put all the information in such small and crisp manner ना कि आपको वो स्टेटमेंट कोई बहुत ज़्यादा हेवी स्टेटमेंट नहीं लगता, मतलब वो किसी बच्चे को भी समझ में आ जाएगा और वो बड़े को समझ में आएगा. So I follow Naaz Daily, I follow Abhi something, Abhimanyu, no, not Abhimanyu. There's two couple, like one couple, they are from South India, and I follow a lot of foreign accounts because they're really good with editing and all. I don't exactly remember the name right now, but I can search. I follow Beer Biceps too. I like the way he, communicates in the video. Yeah, that's all. Oh, nice. Do you want me to tell you the name? Yeah, if you can just tell us like couple of names so that our students can go and check their accounts. Oh God, give me some time. Okay, for tech videos, again, I like the presentation a lot. Something Tequila. This guy is really getting popular these days, and I think over 1 month, I think his followers increased into 1.2 million. So can you just name it once again so that I'll write it for the students? Tequila, TECH TACH underscore underscore IELA. IELA. Okay. And You also said Naaz Daily, so I'm just writing it down. Naaz Daily. Yeah. I think Abhimanyu Himanshi. Abhimanyu. Can you tell me the spelling? Yeah, ABHI. ABHI. Yeah. NI. Wait. ABHIAND and NIYU. All right. Okay. Thank you, Ria. So yeah, I really want to know. Can you tell Also, us? Himanshi, one more thing, I think this will be helpful for your students. I follow this girl, Vanessa Lau. You can type the spelling. VANE VA. Okay. SSA double SA Double SA. space LAU. LAU. Yeah. So you So follow they like these people on Instagram? Yeah, Instagram as well as YouTube. सबका YouTube channel है. I think this girl, she gives you a very nice way of producing your videos. बहुत ज़्यादा feedbacks and features बताएंगे आपको. Oh, that's wonderful. I'm pretty sure our students will get benefited from it.
So yeah, I would like to ask, can you tell us which one of your video is the most liked one, and why do you think that video, went viral or has garnered more likes and interests? So अभी जो मैंने आपको दोनों वीडियो दिखाया है मानसी, like the easy fit and the you breathe one, I think इसका almost more than 200K views है दोनों वीडियो का, ठीक है. So I think again, I think किसी भी content, it's not just one thing that works. Okay, the whole production should be, balanced. उसका scripting, shooting and editing, it should be balanced. तो अगर आप दोनों वीडियो देखो, कंटेंट फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत इंटरेस्टिंग है, द स्टोरी इज इंटरेस्टिंग, ठीक है. एंड दूसरा इट्स वेरी एंगेजिंग, ठीक है. अगेन जब मैं एग्जैक्टली जब बेसिक एक्सपीरियंस यूज करते हो नरेट करने के लिए कि यार तुमको अब दिल्ली और शिमला नहीं जाना पड़ेगा हवा के लिए, अब तुम्हारा फ्रेश हवा घर पे भी आ सकता है. सो सी इट्स सो कॉन्वर्सेशनल, ठीक है. बिकॉज दैट वे आपका ऑडियंस एंगेज रहेंगे थ्रू आउट द वीडियो. So both the contents were interesting, engaging, and relatable to public. And the video again captured the meaning, the message to the way it is being to the way it was presented. And editing, it was very smooth, no glitches. It is properly paced. It has both the videos have a rhythm. ऐसा नहीं कुछ slow हो जा रहा है कहीं पे and कहीं पे fast हो जा रहा है अचानक से. So that communication, that pace is throughout, वो maintain है throughout video पे. So yeah. Thanks a lot, Riya. I think all that you've said today, you've mentioned things, you've mentioned apps, you've mentioned profiles to follow. I am pretty sure all these things are going to benefit our students, and personally me, I'm going to all of these. I'm going to check all of these videos for sure. So Riya, one of the assignments that our students have to they have to make in this particular course that we are teaching, public speaking and persuasion, is to record a video, is to prepare a script of their own and record a video. So other than all of these things you've mentioned, do you have any suggestions for them as to how to share their stories? जितने भी पॉइंट्स मैंने ऊपर मेंशन किए मानसी, ठीक है, दैट्स लाइक दे वर वेरी इंपॉर्टेंट, उसी से आप शुरुआत कर सकते हो. एंड कोई भी स्टोरी अगर दे वांट टू डिलीवर टू वीडियो, सो फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स वेरी बेसिक, ठीक है, बट इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू हैव टू बी ऑनेस्ट एंड ऑथेंटिक इन योर स्टोरी टेलिंग, ठीक है, बिकॉज आप बोलते वक्त ऑडियंस अट्रैक्ट. I'm sorry, Riya, I think we couldn't hear you in between. Can you just repeat it? Hear me now? Can you hear me now? Now it's clear, yeah. So yeah, the most basic one, okay, that you have to be, honest and authentic in your storytelling. I was saying that आपको बोलते वक्त ऑडियंस का ना कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करना होता है, ठीक है. दैट इज हाउ आपका वीडियो इंगेजिंग होगा, कंपेलिंग होगा, ठीक है. एंड डेफिनेटली बिफोर स्क्रिप्टिंग कोई भी स्टोरी पसंद आए तो सबसे पहले सोचो कि इसका ऑडियंस किसको पसंद आएगा. किसी एक दो फ्रेंड्स को दिखाओ वो स्क्रिप्ट, और अगर उनको भी इंटरेस्टिंग लगता है तो आई थिंक बाकी भी फ्रेंड्स को जरूर इंटरेस्टिंग लगेगा, ठीक है. एंड सबसे थर्डली जो ऑब्वियसली इट्स द पावर इन योर हैंड कि आप किस तरीके से उसको डिलीवर करते हो, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. एंड किस तरीके से नरेशन सुनते हो आप उसको डिलीवर करने के लिए. बहुत सिंपल सा प्रोफेशनल वे में भी डिलीवर कर सकते हो. देयर इज नथिंग रॉन्ग इन डिलीवरिंग प्रोफेशनली. साइड करो कि उसका इंगेजमेंट किसमें ज्यादा होगा, प्रोफेशनल बोल के ज्यादा होगा या फिर कैजुअल टोन बोल के ज्यादा होगा. एंड अभी हमें ऐसा लगता है ना कि अगर हम लॉन्ग सेंटेंसेस यूज करेंगे, बहुत कॉम्प्लेक्स इंग्लिश यूज करेंगे, काफी अच्छा अच्छा जार्गन्स यूज करेंगे, तो शायद इट विल हमारा अच्छा होगा वीडियो. बट लेट मी टेल यू ऑल कि जितना क्लियर कंसाइज आपका स्टोरी टेलिंग होगा, ठीक है, उतना इंगेजमेंट ज्यादा होगा. आप एक होनी चाहिए, ठीक है, सिंपल शॉर्ट सेंटेंस. हम बताते हैं डिफरेंस क्या होता है. आर्टिकल्स वगैरह पे देखो, ठीक है, कहीं भी आर्टिकल से अगर आप स्टोरी लेते हो, आर्टिकल जो सेंटेंस होते हैं ना लंबे लंबे होते हैं, इट्स लॉन्ग. एंड खुद की स्टोरी टेलिंग कर रहे हो तो डेफिनेटली यू विल यूज शॉर्ट सेंटेंसेस, वो लंबा लंबा नहीं हो, ठीक है. तो उस तरीके से आई वाज टीचिंग माय जूनियर जो स्क्रिप्ट लिख रहे थे, तो मैंने देखा, मुझे समझ में आ गया कि दिस स्क्रिप्ट हैज बीन कॉपीड बाय एनी आर्टिकल, बिकॉज
स्टोरी कॉपी करना इज नॉट द बिग थिंग, वो तो आप लोगे स्टोरी कहीं से कहीं आपको ढूंढना ही पड़ेगा, बट नरेशन एग्जैक्टली आप कॉपी नहीं कर सकते, ठीक है? तो सिंपल शॉर्ट सेंटेंस मतलब क्रिस्प होना चाहिए, बिकॉज कॉमन सेंस हियर इज कि मैसेज इजीली अंडरस्टूड होना चाहिए एंड रिमेंबर्ड, बहुत इजीली रिमेंबर होना चाहिए, स्टूडेंट्स को बहुत इजीली रिमेंबर करने में हेल्प करना चाहिए। सो एंड अगेन, great content, Manshi, isn't about just teaching something wildly new or providing a list of information to anyone. Okay. It's about delivering message. Wait creates, a moment of enlightenment for somebody. Okay. Like produce any video which will make, create a wow moment. Like, oh my God, nice. ये वीडियो बहुत अच्छा था, ग्राफिक्स अच्छा था, वीडियो एडिटिंग कितना अमेजिंग था यार, वो हमेशा चलता था, ऐसा फीडबैक मिले, ठीक है? Like, ऐसा भी कर सकते हैं कंटेंट, which makes someone say कि wow, oh, that thought of it like that, ठीक है? And the last thing, simplify the concept. आप जब आर्टिकल वगैरह में पढ़ते हो बहुत ज्यादा लिखा रहता है, बट आप ऑडियंस को जब बताना पड़ता है ना स्टोरी टेलिंग पे, तो आपको एकदम सिंप्लीफाई करके बताना चाहिए, ठीक है? कि इनके दिमाग में तुरंत क्लिक हो जाए वो बात, ठीक है? तो जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, आई विल गिव यू वन एग्जाम्पल हियर। मैंने एक स्टोरी की थी, ठीक है, अबाउट एन ऑर्गेनाइजेशन that supports the victims of human trafficking. Okay. So when I was doing this story, I researched a lot and got the data. See, about 8 million people in our country, in India, okay, are trapped in human trafficking. So one way of presenting this is by simply saying it, simply narrating it, because in India, 8 million people are trapped in human trafficking. Okay. This is also nice, but again, creative call after you have to, gain the audience attraction and all. So मैंने क्या किया? I used this. Okay. Almost 8 million people are trapped in human trafficking. That is roughly the entire population of New York City. Now, by this audience will automatically get attracted to this. समझ रहे हो कि oh my God, पूरे न्यूयॉर्क का पॉपुलेशन के बराबर इंडिया में लोग हैं तो trapped in trafficking में. So, from the audience का attention वहीं पे capture होता है, वहीं पे वीडियो तक stable रहता है. So yeah, like this. तो कोई इंफॉर्मेशन तो है, बहुत प्लेन तरीके से भी डिलीवर कर सकते हो, बट अगर उसको अलग तरीके से डिलीवर करना चाहो, जैसे मैंने इसमें किया कि मैंने न्यूयॉर्क सिटी के पॉपुलेशन से कंपेयर किया उस इंफॉर्मेशन को, सो डेफिनेटली ये आई थिंक ये इंफॉर्मेशन जैसे मैंने किसी को भी बताया होगा, दिमाग अभी भी वो इंफॉर्मेशन रिटेन करे यार कि इतने मिलियन लोग ट्रैप्ड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से, मतलब जो न्यूयॉर्क सिटी के बराबर जो लोग हैं इंडिया में, वो लोग ट्रैप्ड है ह्यूमन ट्रैफिकिंग से. सो या, दैट्स ऑल. Oh, that's wonderful, Ria. I think you just even think of this data and to relate it with the population of New York is quite new and surprising. And like you said, I mean, this data will definitely it'll be inside our heads that oh my God, really. So that's true. So I am taking all this information and keeping with me. I'm pretty sure students here are, they have received all these suggestions from you and they'll act on it. So the suggestions that you've given, that first 3 seconds are really important. So you have to create something really attractive in those 3 seconds. So yeah, I guess that's wonderful. I think the video that they are going to make, they'll definitely keep in mind how to engage the audience in the first 3 seconds. Okay, so anyone has any questions, they can type it out. Though we are running short of the time, but I guess if you have some quick questions, we can ask Ria. Any question about video editing or producing or things like that? Manshi, do you have to, properly produce a video, like with editing and all? Yeah. So it's not me. Our students, they have a mandatory assignment. So in that assignment, they have to share a script. So they basically have to talk about one of their life experiences and what have they learned from that particular experience, and if there is a learning. So yeah, they have to write a script on that, and they also have to shoot a video and upload the video.
and that will get uploaded on the YouTube channel of Jaipuria Institute of Management, Jaipur. So this is the exercise. Do you want to add something? Yeah, so I'm telling you all, ठीक है कि जरूरी नहीं है आपको Adobe Premiere Pro ही use करना, because not anybody like जरूरी नहीं है कि सबको वो चीज पता हो, but there are plenty of mobile applications as well. Note down, it will be very helpful if you want to be a content creator, or anybody if you want to start your own YouTube channel or Instagram account. This is VN Editor app. It's very Okay, helpful. so I just write it down. Ria, whatever you're saying, I'm going to write it down so that it will help the students. So to all the students who want to generate their own content, you want to, open their, start their YouTube channels and Instagram profiles. Here are few editing apps or editing software that Ria is going to share that has proven helpful to her. All right, Ria, yeah. So first one is Vita. VITA. Just Content VITA. Yeah, you will love the transitions, font style. You have so many suggestions and all. You know, no, बिल्कुल भी Adobe Premiere Pro use करने की जरूरत नहीं है इस चीज के लिए. Okay, all right. And second is VN Editor. I'm sorry, can you tell me, can you spell it, please? V N yeah, Editor. Okay, so VN space editor. Yeah. Okay, Second is InShorts. IN okay. IN SHORTS. SHORTTS in shorts. Okay. I think many people don't know मतलब Vita. I'm 100% sure. Even All right. So you're saying it's not as important to buy the whole Premiere Package Pro. Yeah, you have free apps as well. to Premiere. You don't have to go to Premiere Pro if you have these applications there. Oh, that's such a nice information and useful information, Ria, that you've given our students. So Ria, we have few questions. Harshita here wants to ask, what are the major challenge you face while creating a video? So what are some of the problems that comes while making a video? See, first of all, creativity, it's not a mundane job to do it, because creativity कभी भी at a point, नहीं आता है. तो कभी कभी हमें स्टोरी मिल जाती है पहले, बट हम लोग बहुत टाइम लगाते हैं स्क्रिप्टिंग पे, बिकॉज अगेन कि वो स्टोरी शेप करना है, टेक्स अ लॉट ऑफ अगेन मूड बहुत मैटर करता है. एक आर्टिस्ट का मूड हमेशा अच्छा होना चाहिए. Wow. Okay. Because अगर किसी भी चीज को लेकर मूड अपसेट है ना, तो यू वोंट बी एबल टू थिंक लाइक दैट कि अच्छा क्या सोचे. तो आई थिंक दैट इज मेरे लिए सबसे बड़ा चैलेंज है वो, कि मैं जो हर दिन फेस करती हूँ कि डू ठीक है, हाउ टू शेप दिस वीडियो. एंड इट्स टेक्निक. जब हम लोग नरेशन करते हैं ना अलग कैरेक्टर्स पे, स्पेस में कभी कभी इशू होता है, बिकॉज राइट नाउ आई एम वर्किंग फ्रॉम होम. Space, So- the issue of space. Yeah, space. Okay. For example, I'm working with a LinkedIn, paid content, LinkedIn content. तो जहाँ पे हमें एज अ इंटरव्यू का, इंटरव्यू का सेटअप दिखाना, ठीक है. सो एट होम इट्स नॉट पॉसिबल, राइट, कि आप प्रॉपरली वैसा ऑफिस जैसा स्पेस दिखाओ. बट समहाउ हम लोग वो डिलीवर करते हैं सब कुछ वो करके. So these are the small challenges. और मेरे लिए, because I'm using Premiere Pro बहुत ग्लिच करता है. तो मेक श्योर अगर कोई भी Premiere Pro यूज करता है तो कंट्रोल एस हमेशा दबाए रखना. कि मेरे साथ ऐसा बहुत बार हुआ है मानसी, जब पूरा प्रोजेक्ट रेडी हो जाता है ना, अचानक से ग्लिच हो जाता है, लैपटॉप शट डाउन कंप्लीटली, एंड so like 6 to 7 hours of work, like, so yeah, control plus S, it's mandatory for video editors who are using Premiere Pro. That's that. Thank you for the answer here. Harshita, I hope you got your answer. So Anurag here wants to ask Ria, how to start the script and what are the things to be kept in mind while making video. I think you've answered it, but could you quickly just reiterate? सबसे पहले वही है, टारगेट ऑडियंस आपको क्लियर रखना पड़ेगा अनुराग. आप कोई भी स्टोरी सेलेक्ट करते हो तो आपको एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग होगी कि शायद इस सेक्शन के लोगों को ज्यादा पसंद आएगा. तो उसके अकॉर्डिंग आप टोन डिसाइड करोगे अपने वीडियो पे, ठीक है, कि हम ये कैजुअल टोन करेंगे या फिर फॉर्मल टोन करेंगे. दिस वन थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि शुरुआत हमेशा इंटरेस्टिंग तरीके से होना चाहिए. प्लेंटी ऑफ वीडियोस अवेलेबल. तो आपका वीडियो आउट ऑफ द बॉक्स कैसे होगा? एडिटिंग से होगा, वे ऑफ नरेशन से होगा.
और वे ऑफ नरेशन तभी आएगा जब आप स्क्रिप्टिंग अच्छा होगा। तो स्क्रिप्ट स्टार्टिंग के 3 सेकंड जो होते हैं उसमें हुक बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, ऑटोमेटिकली लगे कि अरे नहीं, लाइक दिस। सो या स्क्रिप्टिंग के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट। Thank you, Ria. There's another question by Shivangi. Shivangi asked, ma'am, how to search information relevant to the topic we want to research? What happens most of the time that there is so much information available on internet, we don't know which is the correct one, or it's very difficult to segregate the correct information from the false information. So yeah. So I'm a multimedia journalist, so I'm doing this thing. So like while reading any news, like any information on the internet, I get a sense कि क्या बकवास कर रहा है, this is not how it is written. तो वो आर्टिकल मैं ऑटोमेटिकली क्लोज कर देती हूँ। इतना इन्फॉर्मेशन अवेलेबल है ना कि कोई भी स्टोरी को अगर हम सर्च करते हैं तो व्हाट आई डू कि फॉर एग्जांपल कोई भी स्टोरी है तो मैं ऐसे करूंगी, व्हाट ऑफ दिस स्टोरी, व्हेन ऑफ दिस स्टोरी, व्हाई ऑफ दिस स्टोरी, ये पांचों अलग अलग टैब में खोल देते हैं। एंड उसके बाद मैं ज्यादा ऐसे नहीं कि एक इन्फॉर्मेशन का आपको 10 टैब खोलना है, 10 जगह से आपको इन्फॉर्मेशन लेना है, 3 वर्क। अगर आप एबीपी भी खोल दोगे, टाइम्स ऑफ इंडिया भी खोल दोगे, एचटी भी खोल दोगे, तो फिर सबका वे ऑफ नरेशन अलग होता है, सबका वो अलग होता है। 5W and 1H जाननी है, बट क्रेडिबल आर्टिकल ठीक है। अब जैसे मेरा बहुत सारा वीडियो कंटेंट बेटर इंडिया, ह्यूमंस ऑफ बॉम्बे से वो है, कुछ किया हुआ है, तो उनका तो बहुत क्रेडिबल होता है, ठीक है। और हम लोग मेक श्योर भी करते हैं, फॉर एग्जांपल अगर हम किसी स्पेसिफिक लाइक अभी मैंने एक वीडियो बनाया था LGBTQ अलाई के साथ, so we talk to them, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई इंटरव्यू हमें इंस्टाग्राम पे मिलता है, सी it's a digital era, you can find anybody on LinkedIn, Instagram, they all have public account, LinkedIn page, you can connect with them if you want to verify any information. So yeah, these are the small things which we do on a regular basis. Oh, that's interesting. So you're saying that you write the what, the why, and the how of each, all Yeah, the the 5 keywords, and different, then all the keywords. you open 5 tabs of all those things. Yeah, Oh, so this what, is a long when, process. when you're doing it, So for you it might not be, but I guess this is a good way to verify information. way Okay. to jot down all the information like what, when, why, where, who, and how. These are 4 pillars of any information. Right, So, right. yeah. Yeah. So do you have any other further questions? I guess we don't have further questions, Ria. This was all. Yeah, I don't think so. We have any. All right. Okay. So Ria, we thank you once again for your time, for your telling us all these small nitty-gritties of of script writing, of editing, of video producing. I know you are really busy and you have your work going on, but you've taken out this time to come with us and share your stories with us. Tell us about several apps that might be useful to students and all the small things that is relevant to students, specifically for people who are just beginning to do all of those things. um, so I thank you again, Ria. I extend my gratitude from all the Jaipuria Institute of Management people. Thank you once again. So much, Himanshi, for inviting me for this session. And I hope that session was useful to listeners. And if you all, if you have any doubts, or if you guys have any doubts or you want to talk further, you can connect me on LinkedIn and Instagram as well. So yeah, and I also extend my gratitude to Jaipuria Institute of Management Jaipur for inviting me. So thanks a lot. All right, Ria, take care. We'll see you. Take care. Bye-bye. Bye. Thank you once again. Thank you.